Good morning, dear students. In the previous video, we have discussed two topics of chapter number 3. Now, starting with the third video of the same chapter, the topic is token. So, tokens are what? So, as you all know, when we make a Java program, so it contains very small components inside it. That means Java program consists of the different types of instructions, and each instruction is formed by some small components, and those small individual components are known as tokens, where each and every component actually carries some specific meaning. यानी कि हम जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जब जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस से बना होता है ना। हम इतने सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली हमारे वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। जैसे हम लिखते हैं पब्लिक हमने लिखा, या हम वी आर यूजिंग सेमीकोलन, समवेयर वी आर यूजिंग ब्रैकेट, समवेयर वी आर राइटिंग क्लास, like this we are using dot operator. So all these are what? Tokens, right? So here is the definition for token. So computer program is a set of statements, and a statement is composed of various components where individual component of a program is referred to be a token. Already explained. Now the different types of tokens available in Java are, here it is, literals. These are tokens. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोग्राम में. It consists of different types of components. Now we are dividing those components into different categories. Now what are those categories? Literals, assignments, separators, keywords, identifiers, punctuators, and operators. So these are your types of tokens, right? Or there is a short trick also, like in this way you can learn it. K O P I L A, Kopila. K for your keywords, O operators, P punctuators, I identifiers, L for your literals, A for your assignment, and this separator actually, this we can consider as a part of punctuators also, but here it is given in a different way, so you can learn it separately. Kopilas you can make it, है ना. So कोपिल आप ऐसे याद रख सकते हो, कपिल, कोपिल हम याद करते हैं ना, सिंपल हम नेम से हम जल्दी चीज़ें याद कर लेते हैं. सो इट इज़ कोपिल A, Kopila. ठीक है. So this is the short trick to learn the types of tokens. So now if I write it here, now let it revise. If I write here Kopilas, now tell me, K stands for keywords, O operators, P punctuators, I identifiers, L literals, A assignment, S separator. So these are what? Tokens, different types of tokens. Very easy to learn, है ना. Individually if you will learn it, it will be little bit complicated, and maybe there will be the possibility that you will forget any one of these, है ना. But now if you will learn it by a trick, you will never forget it. Okay, fine. Now next here, tokens example is given here. हम एक एक तरीके का example लिया हुआ है, but we will study each and every part. Look at here. First we are starting literals. So literals means these are the constant, or the another name of literal is constants. Okay, in a Java program which remain fixed, that means it do not change throughout the execution of the program. So these are some constant values, like if I say 2, so this is a constant value, it cannot be changed. If I say 15, constant value, cannot change. If I write 17.50, constant value. So these all the things are known as what? Literals. If I say capital A, it is again a literal. ठीक है. So these are fixed. Now look at here, Java uses literals classified in the following ways. Now literals are again of different types. Here integer literal, real literal, character literal, string literal, and two more are there. Now we will start with the first one, integer literal. So integer literals which are represented without a decimal point, सिर्फ क्या याद रखना है, ऐसे number either it may be positive or it may be negative, but without decimal point. Look at here, 14, 345, 8,
6392, -18, -391. These all are what? Integers without decimal. Means if I write here 39.1, so it is wrong. This is not integer literal. So integer literals are those numbers, actually are those literals which are used without decimal point. यानी कि जो प्योर नंबर्स होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज इंटीजर लिटरल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रियल, दैट आर यूज्ड विद द डेसिमल पॉइंट, जस्ट रिवर्स ऑफ इंटीजर लिटरल. ये क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल. दिस इज व्हाट? विद डेसिमल. फॉर एग्जांपल, एंड वन मोर थिंग बिफोर डिस्कसिंग एग्जांपल, रियल लिटरल्स आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. रियल को फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है. एग्जांपल 24.6 पॉइंट आ गया ना विद डेसिमल पॉइंट. 0.0072, ठीक है. -3.652, करेक्ट. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं इसमें. देन 1.0 e -03, इट मीन्स वॉट? इट इज़ लाइक दिस 1.0 इंटू 10⁻⁻03. सो क्योंकि पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट है ना, सो या इसका मतलब क्या हुआ कि 1.0 पॉइंट आने का मतलब ये कैसा हो गया? रियल लिटरल हो गया. वेयर ई का क्या मतलब है? ई stands for exponent. E stands for exponent. Like numbers we can also represent in this way, but this you will study in the higher standard, not here. So up to now you can only go through the example. So any number with decimal point will be considered as real literal, and without decimal point, integer literal. Correct है ना? Okay, now next is character literal. So character literal represents a single character. Focus it here. Single character enclosed within single quotes. Single character single quotes में होना चाहिए. For example, A single character है, enclosed in single quotes. A को ऐसे लिखा है like this. So it is a character. If I write D in single quotes, character. If I write 3, उसने कहा देखो single character. अब character doesn't mean only alphabet. Character can be considered means you can consider number, you can consider any special digit, or you can consider ABCD as the characters. Everything will be considered as a character. So if I write 3 in single quote, एक single character है और single quotes में है तो it will be considered as character. If I write star in single quote, again what? Character. If I write plus in single quote, what it is? Character. है ना. साइन है, प्लस इज अ साइन, बट क्या है देखो सिंगल कैरेक्टर है एक तरीके से, एंड एनक्लोज्ड इन व्हाट? सिंगल क्योट्स. क्लियर. नेक्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल. सो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर. अल्फान्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट प्लस नंबर. अल्फ़ाबेट प्लस नंबर दोनों का ही कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू विल टेक एवरी टाइम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल क्योट्स means character are enclosed in single quotes but string are enclosed in double quotes. ठीक है. Look at here, computer in double quotes is a string literal. Year 2016 in double quotes string. 10% per annum in double quotes string. So all these will be considered as string. If I write H in single quote, what it is? Character. Yes or no? If I write H in double quotes, now this will actually become what? String. क्यों? Because we studied what? That it can contain alphabets also. String can contain alphabets also, or it can contain number also, but it should be enclosed in double quotes. तो अगर कोई भी चीज़ डबल क्योट में लिखी हुई है तो वो क्या कंसिडर होगी? स्ट्रिंग. और अगर एक सिंगल कैरेक्टर आपका सिंगल क्योट्स में रिटन है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर. Now tell me, if I write 1 in single quote, what it is? Character. Good. If I make it here double quotes, now what it will be? String. Correct. If I write 10 in single quote, what it is? Nothing. ना तो ये स्ट्रिंग है ना ही ये कैरेक्टर है. क्यों? क्योंकि कैरेक्टर क्या कहता है कि सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल क्योट. तो सिंगल क्योट वी आर यूजिंग, बट वी आर नॉट राइटिंग सिंगल कैरेक्टर, वी आर राइटिंग 2 digits 1 and 0. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैरेक्टर. इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग लिटरल, सो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि डबल क्योट्स यूज होने चाहिए, एंड डबल क्योट्स आर नॉट यूज्ड हियर, सो इट इज़ नाइदर दिस नॉर दिस. करेक्ट. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग हियर बूलियन लिटरल. So Boolean literals are special literals. They represent true or false value. Means
ऐसे कोई भी वेरिएबल्स दैट कैन कंटेन ओनली टू वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स विल बी कंसिडर्ड एज बूलियन लिटरल. Okay, but you need to remember one thing, that you must note that boolean constants true or false are never enclosed within quotes. कभी भी डबल क्यूट्स में नहीं लिखा जाता. अगर आप ट्रू को, फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ़ यू राइट ट्रू इन डबल क्यूट्स, नाउ व्हाट इट विल बिकम अ स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि आपने क्या किया है, कुछ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को इनक्लोज किया है डबल क्यूट्स में, तो इट विल बी कंसिडर एज योर स्ट्रिंग लिटरल नॉर बूलियन. तो अगर आप सिंपली लिखते हो ट्रू, सो इट विल बी कंसिडर एज बूलियन लिटरल. करेक्ट. नेक्स्ट इज योर null literal. So null literal means what? Now next is what? Null literal. So this is another special literal. It is represented as this, \0 in single quotes. If after string literal you write this symbol, so it will be considered as a string literal. ठीक है, sorry, null literal. It is used in Java program as a string terminator. Like example देखो, if I write hello, after that this, ये लिखा, so इसका मतलब क्या हुआ कि string is terminated. Now after hello there is no word. और suppose करो, suppose if I write hello null literal world, ठीक है, ये हमने लिखा है. सपोज हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, SOPLN दिस कंप्लीट स्टेटमेंट. सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज यू नो दिस साइन कंसिडर एज अ नल लिटरल. नल लिटरल का मतलब ये कंसिडर हो रहा है एज अ स्ट्रिंग टर्मिनेटर की तरह, तो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई. इसका मतलब क्या है कि इन प्लेस ऑफ hello word should be printed. You want that hello word should come on the output screen, but in place of that you will get on the output screen only hello. आपको सिर्फ क्या आंसर मिलेगा, hello. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या आ गया है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ गया है. तो वो कंपाइलर क्या समझेगा, कंपाइलर विल थिंक दैट ओनली hello इज द पार्ट, है ना, हेलो आई हैव टू प्रिंट, यानी कि मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट कराना है, कंपाइलर को ऐसा लगेगा. ठीक है, तो कंपाइलर एक्चुअली विल नॉट प्रिंट दिस वर्ड बिकॉज इट विल कंसिडर दिस स्ट्रिंग दैट इट इज़ टर्मिनेटेड ओनली एट दिस एंड. ठीक है, सो हेयर वी कैन यूज दिस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग आइडेंटिफायर्स. सो आइडेंटिफायर्स, नाम से पता चल रहा है, नेम इट सेल्फ सिग्निफाइज वॉट, कि आइडेंटिफाई विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट पब्लिक क्लास demo, suppose public class demo. So demo is actually what? Demo is the identifier which is identifying that I am a class whose name is demo. मैं एक ऐसी क्लास हूँ जिसका नेम क्या है, डेमो है. तो ये खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, डेमो, है ना. तो आइडेंटिफायर इज यूज टू रिप्रेजेंट और टू आइडेंटिफाई समथिंग. नाउ हियर वेरिएबल्स, identifiers are also known as variables. तो variables used in Java programming are also known as identifiers. Now what is variable? So variable is named memory location. Named memory location यानी कि मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन होती है जिसका अपना कुछ नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर मेमोरी विच इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स. सो वेरिएबल का मतलब, सपोज n वी हैव क्रिएटेड हेयर, वेयर n इज़ अ वेरिएबल, और इसका नाम क्या है, ये एक मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर, ये विच विल टेक सम वैल्यू, सपोज 10, एंड इसका नेम क्या हो गया, n, है ना. सो ये जो n हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इट इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल, और यू कैन से इट एज आइडेंटिफायर, है ना. सो इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन जिसका अपना खुद का एक नेम होता है, एंड विच कंटेन सम वैल्यू. हियर इट इज़, यहाँ पे आप देख रहे हो कि n इज़ अ वेरिएबल, n इज़ आइडेंटिफायर विच कंटेन्स अ वैल्यू 10 इन द मेमोरी, एंड द वैल्यू कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, यानी कि डिपेंड्स कि आप व्हाट एक्चुअली टास्क यू आर कैरिंग आउट ऑन इट, यानी कि आप उस पर क्या वर्क परफॉर्म करा रहे हो, उसके बेसिस पे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन ऑल्सो चेंज. क्लियर. Now here is the syntax, how to use it. Now if you want to define the variable, तो हमने डिस्कस किया ना 8th स्टैंडर्ड में, we did a lot of programs. So we have written int m,
int n, int radius या int circle या int area या float area, double si, we have taken a lot of variables. So हम जो वो लेते हैं variables जो हम n use कर रहे हैं, n, m, p, q, r, whatever we were using in that 8th standard, so those were what? Those were actually variables, है ना. यहाँ पे देखिए अब syntax. Syntax का मतलब होता है format. Syntax means format. Now this is here is the example. Now question can come in your exam in this way कि what is variable, also write a syntax. So definition के बाद if you will write this, so it will be wrong because syntax is this. Syntax का मतलब होता है format. क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में फॉर्मेट पूछा जा रहा है, ठीक है. तो एग्जाम्पल पूछेगा देन यू विल राइट दिस मच, अदरवाइज दिस सिंटेक्स. नाउ सिंटेक्स में फर्स्ट वी राइट डेटा टाइप. सो डेटा टाइप इज इंट. देन वी आर हैविंग सम स्पेस, तो हमने यहाँ पे इसके बीच में दिया सम स्पेस. आफ्टर दैट वी राइट व्हाट, वेरिएबल नेम. सो हेयर वी हैव रिटन m. In the same way, if I want to declare a variable of float type, so I will write the data type here, float. Then I will give some space, here I have given some space. Then I will write variable name, suppose q. So this is how I will declare the variable. Now tell me one thing, if I want to declare a character type of variable, so how I will declare, char, then some space, then write here suppose a. Okay, so this is what it is, a variable a whose data type is character. That means it can store character type of value. Clear हो गया. Now do not ask me why I have not written here single quotes. Single quotes का मतलब क्या हो गया कि it will become a value now. It is not a variable. Like एक difference मैं आपको बताती हूँ. If you write char a is equal to suppose y. Now what does it mean? It means a is what? A is an identifier, or you can say a is a variable. Char is what? Char is the data type. Char is the data type, and this y is what? It is a character literal. It is a character literal. Clear हो गया सब में difference? So ये क्या है actually? This is a value. This is a value. For example, जैसे आप लिखते हो ना int a is equal to 10. So 10 is what? 10 is a value and a is a variable which will hold the value 10. Clear हो गया difference? Okay, now see one example. Before execution and after execution. If I have taken int m is equal to 5, so a memory में क्या होगा, a variable will get created with the name m. Now this is what it is, a memory which is divided into a set of blocks में divided है. Now it has stored a value 5. यहाँ पे m में 5 store है. Now in the next line I have executed, I have written one statement in m is equal to m into m. Now m की value कितनी है? 5. Next m की value again 5. 5 into 5 is 25. Now this 25 will get again assigned to m. So what was the previous value of m here? 5. Now this will get deleted from here and the new value will get stored here. What is the new value? 25. So at this memory location 25 will be stored. Clear? So after updation, in place of this 5 value, 25 will be there. Clear? Next is the rules for naming a variable. So first rule is a variable may have any number of characters. Means if you want to declare a variable, it can contain any number of character like int. I can take a single variable a. I can take double a. I can take int aay. I can take aayz. Something like this. So that means any number of character you can take. There is no restriction to take. Second point. It may contain alphabets, digits, dollar sign and underscore. कुछ भी हो सकता है, ठीक है. जैसे अभी हमने बोला है कि ए अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है. इट कैन कंटेन डिजिट ऑल्सो लाइक इंट ए. सो इट इज़ करेक्ट? येस. इफ़ आई राइट इंट ए, क्योंकि वो कह रहा है अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, तो इफ़ आई राइट A1, इज़ दैट करेक्ट? येस. इफ़ आई राइट इंट
1a. Is this correct? No, because variable name cannot start from a digit. Variable name digit से start नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, incorrect है. But if I write a1 then it will be considered as correct. अच्छा, next देखो. Next point is dollar sign. If I write int a dollar, is that correct? Yes. If I write int $a, is that correct? Yes. If I write int a $b, is that correct? Yes. Dollar sign you can use anywhere. Same for the underscore sign, you can use it anywhere. अंडरस्कोर साइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एट द स्टार्टिंग, एट द एंड और एट द मिडल पॉइंट. यू कैन यूज़ एनी वेयर, बट डिजिट्स यू कैन नॉट यूज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यू कैन यूज़ इट एनी वेयर बट नॉट एट द स्टार्टिंग. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्कोर कैन बी यूज इन बिटवीन द कैरेक्टर्स टू सेपरेट द वर्ड्स. हम उसको मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज द वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल. ऑब्वियसली अगर आप नंबर लेते हो तो नंबर के लिए जनरली व्हाट वी टेक इंट एन. सो एन को समझ में आता है पढ़ के क्या, कि एन इज़ व्हाट यूज टू स्टोर अ नंबर. और आई कैन टेक हियर इंट एस आई. So it means what I am going to calculate here simple interest, that's why I have taken SI. I can also write int area. So area means I am going to calculate the area of any particular object, like area of circle, area of parallelogram, area of square, something like this. So that means name should be meaningful according to the given question or according to the given problem. Clear? Next, assignment. नाउ असाइनमेंट यू नो, असाइन करने के लिए कोई वैल्यू हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ टोकन इक्वल. दिस इज द असाइनमेंट टोकन विच इज यूज टू असाइन अ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर इज द सिंटेक्स. फर्स्ट वी राइट डेटा टाइप, देन वी राइट वेरिएबल, देन वी राइट इक्वल, देन वी राइट कॉन्स्टेंट. लुक एट द एग्जाम्पल. इफ आई राइट इंट m इज इक्वल टू 15, इसका मतलब इंट क्या है, इंट इज अ डेटा टाइप, m इज द नेम ऑफ वेरिएबल, is equal sign is used to assign the value, 15 is a constant value. इसका मतलब क्या हुआ, 15 is a value which is going to assign into a variable m. 15 एक ऐसी वैल्यू है जो किस में असाइन हो रही है, m में, और वो m किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर देयर, सो एनी वन ब्लॉक विल गेट असाइन. सपोज दिस इज m which will store a value 15. So this is the meaning of this statement. Clear? Moving on to next, float n is equal to 45.24. अब float क्यों लिया है, because it contains number with decimal point, है ना, point लगा हुआ है बीच में, तो किस में आएगा, float में. आप चाहे तो किस में ले सकते हो, डबल में भी ले सकते हैं. सेम फॉर कैरेक्टर, CH-R इज इक्वल टू K. अब आपको क्या करना है, K एक ऐसी वैल्यू है जो किस टाइप की वैल्यू है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है. सो एज यू नो कि कैरेक्टर स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन सिंगल क्यूट्स, तो K को कैसे लिखना पड़ेगा, इन सिंगल क्यूट्स. एंड क्योंकि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, सो यू आर टेकिंग हियर कैर डेटा टाइप एंड CH-R इज द नेम ऑफ वेरिएबल. नाउ यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल ऑल्सो. लाइकवाइज you can write char ch is equal to k. It means what, char is the data type, ch is the name of variable, is equal is the assignment token, and k is the constant value, character constant. ठीक है. इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग के लिए लिया है. नाउ नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड असाइनिंग कांस्टेंट टू इट. अब देखिए यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने एक डिक्लेयर किया है वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, वन वेरिएबल वी आर टेकिंग ऑफ लॉन्ग टाइप लॉन्ग बी, वन वी आर टेकिंग फ्लोट एफ, वन वी आर टेकिंग डबल बी, वन वी आर टेकिंग कैर ch, then string str, then boolean p. Now see, whatever names we are using, variable names we are taking here, it depends on you whatever you want to take. बट इससे पहले जो ये डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं ना, दीज आर फिक्स्ड. ये जो डेटा टाइप्स है ना, दीज आर फिक्स्ड. ठीक है, यानी कि आपको इनको इन्हीं तरीके से लिखना होता है. बट जो आइडेंटिफायर के नेम है, ये क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स है ना, वेरिएबल नेम्स. सो ये जो है एक्चुअली वो क्या होंगे आपके, से मतलब आप चेंज कर सकते हो. अच्छा, नाउ कम ऑन द राइट साइड. नाउ a is equal to, because you know कि a is of integer type, so it can take only integer numbers without point, without decimal point. So a is equal to 5 you can take, no problem. Single digit, double digit, 3 digit, whatever you want. You can also take here -5, that is also correct. Now long.
Long takes some larger numbers, like around if you want to store the phone number of any person, so for that purpose you will not use int, you will take long. ठीक है, और क्योंकि ये भी क्या स्टोर करता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर से स्टोर करता है, तो 2 3 4 5 7 6 3 लॉन्ग में जाएगा, इंट में नहीं जा सकता है. फ्लोट एफ और डबल एफ ये दोनों ही कैसे स्टोर करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में, नंबर्स डेसिमल पॉइंट्स में ही स्टोर करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस देन, these are used for a small range, these are used to store some wider range of numbers. यानी कि अगर ज़्यादा बड़े नंबर्स होंगे तो वो किस में जाएंगे, डबल में स्टोर करोगे, और अगर नंबर्स छोटे हैं तो किस में आएंगे, स्मॉल में. जैसे कि अराउंड 4 डिजिट तक 5 डिजिट तक यू कैन टेक द नंबर इनटू फ्लोट, बट इफ द नंबर विल बी ऑफ अराउंड 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट देन यू विल स्टोर इट इनटू डबल. क्लियर है ना, दोनों को डेसिमल में यूज़ करते हैं, सिर्फ क्या डिफरेंस आता है, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर्स. सो हेयर फॉर फ्लोट एफ आई एम यूजिंग अ वेरी स्मॉल नंबर 3.45 एंड फॉर डबल वी आर टेकिंग अ वेरी लार्ज नंबर. लुक एट दिस, है ना, मतलब नॉट लार्ज नंबर, हम लार्ज तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि ग्रेटर तो ऑब्वियसली यही है, बट जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दैट आर वेरी लार्ज, दैट्स वाई. नेक्स्ट इज कैर CH. तो कैरेक्टर के लिए आपको पता है एक सिंगल कैरेक्टर सिंगल क्योट्स के अंदर. Now move on to next, string str. Now string can take any number of set of character enclosed in double quotes. So look at here, double quotes we are using. Yes or no? Next is boolean p. So I told you that boolean can store only two type of value, either true or false. So here we are taking p is equal to false. But if you will write in double quotes false, so you will not take p of boolean type. Now you have to take it of which type? String. Is that clear now? I hope this is clear that which type of variable you will use according to the values stored into it. Clear? Good. Now next, initializing a variable. So when you declare a variable, declare का क्या मतलब होता है, declare का मतलब this. Look at here, this is known as declaration. This is known as declaration. That means when you will define the data type of any variable. जब आप किसी भी variable का data type बताते हो ना, so this is known as declaration. And this is known as what? Initialization. Initialization means to give some initial value. To give some initial value. जैसे a is equal to 5. That means we are initializing a as 5. हम a के अंदर 5 की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं. सो ये क्या हुआ हमारा इनिशियलाइजेशन, और हम बता रहे हैं कि a किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ऑफ इंटीजर टाइप. तो दिस इज नोन एज व्हाट, डिक्लेरेशन. क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन? Declaration means data type, initialization means means initializing value, assigning value. Now come back again here. When you declare a variable, जब हम एक variable declare करते हैं like int a, so it may contain a garbage value. Now what is garbage value? Garbage value का मतलब होता है कोई भी ऐसी value which was already stored at that memory location. यानी कि आपने कभी वो memory location किसी और variable को assign हुई थी और वहाँ से भी वो value delete नहीं हुई है. For example, suppose करिए this is your memory which is divided into a number of blocks. ठीक है. Now here some values are already stored, 21, 28, 14.5, something like this. And suppose when you have written this statement int a, and a got this memory location, this one. Now already suppose some values already stored there, पहले से उस पर कुछ स्टोर है, सपोज करो. सो ये क्या है हमारी, ये होती है गार्बेज वैल्यू. यानी कि आपने साइन नहीं किया, जो पहले से सपोज करो स्टोर है वो डिलीट नहीं हुई है, मेमोरी लोकेशन फ्री नहीं हुई है, पहले से स्टोर रखी हुई है. सो वो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा. नाउ इफ़ यू विल डू a into a, if you will write b is equal to a into a, so what will happen, 25 into 25, है ना, ऐसा हो जाएगा. तो क्या होगा, हमने क्या किया है, हमारा जो टास्क परफॉर्म हुआ है स्क्वायर कैलकुलेट करने का, वो एक्चुअली किस पे हुआ है, गार्बेज वैल्यू पे हुआ है. दैट मीन्स वी हैव नॉट इनिशियलाइज्ड एनी वैल्यू, है ना, गार्बेज वैल्यू पे वी हैव कैलकुलेटेड द स्क्वायर. सो इन दैट केस वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. हमें कैलकुलेट तो करना था 5 का स्क्वायर, बट वो किसका स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, 28 या 20 वॉट एवर आई हैव रिटन हियर 28. ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया बाय डिफॉल्ट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, this will create a problem for you. So for that purpose we initialize the variable also. Clear हो गया. Now go through the point again. When you declare a variable, it may contain some garbage value and which you may not obtain an appropriate result through your program
लॉजिक इज दो योर प्रोग्राम लॉजिक इज करेक्ट, चाहे आपका प्रोग्राम का लॉजिक करेक्ट है, जैसे मैंने स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए लिखा तो मेरा लॉजिक तो करेक्ट है ना स्क्वायर निकालने के लिए, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, येस, बट स्टिल आई विल नॉट गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट, सो इन दैट केसेज इट यू नीड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो वी हैव टू इनिशियलाइज, इफ़ आई वॉन्ट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, मुझे अपने अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। सो टू टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन वी आर हैविंग, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन, क्लियर है। अब आ जाइए वन बाय वन स्टैटिक एंड डायनामिक इनिशियलाइजेशन पे। सो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन यूजेस डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ अ कांस्टेंट टू अ डिफाइंड वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली कांस्टेंट असाइन कर देना, डायरेक्ट असाइन करना इज नोन एज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, here we have taken the data types, here I am going to declare the variable, so we have taken here int a, this is declaration है ना, int a, float f, double d, char c, string s, boolean p, ये तो हम डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पार्ट। Now come to the right part. Look at here. This is static initialization A. A को हमने वैल्यू दी है इंटीजर टाइप की which is what 0. But then next one is float f. I have taken here 0.0. Double D 0.0. Char C. This is what null character. हम जनरली ये देते हैं null character. डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये, ठीक है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन कैन कम इनटू योर माइंड कि कैरेक्टर में तो आई कैन टेक ओनली सिंगल कैरेक्टर इनसाइड इट, है ना, बट एक्चुअली दिस इज द नल कैरेक्टर, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैरेक्टर इटसेल्फ, क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग एस, तो क्योंकि स्ट्रिंग एस जो होता है हम उसमें असाइन कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू डबल क्यूट्स में आई कैन राइट हियर हेलो, and suppose if I don't want to initialize anything into string type variable, so I can simply write here double quotes, so it means we are not assigning anything, that means null, कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब हमने कुछ असाइन ही नहीं करना है अगर, तो हम सिंपली उसको ऐसे भी डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका कोई पहले से वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर तो वो डिलीट होकर क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। अगर पहले कुछ और सपोज स्टोर था वहाँ पर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैंक, वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बूलियन पी, so p can store the value false, so means हम कर क्या रहे हैं, देखो we are actually directly assigning the value, we are directly assigning the value to a variable. Now I can also write in this way, suppose int a, so I can write here a is equal to 100, this is also static initialization. If I taken here double d and I can write here d is equal to 10.00568896, something like this, this is also static initialization. If I write boolean p, तो p is equal to true, this is also static initialization, yes or no, clear हो गया। मतलब हम डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं कि 100 a के अंदर आ गया, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई एंड दिस वैल्यू विल गेट स्टोर इनटू दिस, सो दिस इज नोन एज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। When a variable get initialization at runtime, when a variable get initialized at runtime, that means during the execution of the program, then it is termed as dynamic initialization. Under this situation, a variable is assigned with the outcome of any arithmetical operation or logical function. इसका क्या मतलब है, it means अगर आपका initialization किसी पर्टिकुलर आउटकम पे डिपेंड करता है, किसी आउटकम पे अगर आपका इनिशियलाइजेशन डिपेंड कर रहा है, देन इट इज़ नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट हियर इंट a is equal to 2, b is equal to 3, now c is nothing. Now if I write c is equal to a plus b, so a is equal to 2 is it is a static initialization, directly assign किया है, b is equal to 3 is a static initialization, but c में we have not assigned anything। अब हम क्या कर रहे हैं, c is equal to a plus b, now this addition operation will get performed only at runtime, that means when your program will get executed, only at that time c will get assigned, यानी कि c का जो वैल्यू है, c की जो भी वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन पे डिपेंड कर रही है। मतलब जब एडिशन परफॉर्म होगा तब c के अंदर कोई वैल्यू आके स्टोर होगी, अदरवाइज इट इज़ नल, नथिंग इज देयर,
और इट में कंटेन सम गार्बेज वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि आपने तो कुछ इनिशियलाइज किया नहीं है, सो इट कैन कंटेन एनी गार्बेज वैल्यू इन दैट केस, ठीक है। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन द इनिशियलाइजेशन इज डन एट रन टाइम। अब देखो आप यहाँ से देख के तो बता सकते हैं कि 2 + 3 = 5, बट व्हेन यू विल रन इट एक्चुअली, then at that time execution takes place and finally the C will store some value, ठीक है। सो ये हमारा रन टाइम पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म, यानी कि रन टाइम पर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा 2 + 3, सो कितना आएगा 5। तो यानी कि ये जो 5 जाएगा C के अंदर, दैट विल गेट स्टोर एट एग्जीक्यूशन टाइम ओनली। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इज दैट ओके? Now look at this example. Suppose now int a is equal to 49, so here a is equal to 49, ये क्या है आपका static initialization। double d यानी कि nothing is there, only declaration, no initialization। now if I write the statement into our program, d is equal to math.sqrt a। now what is the use of this sqrt? used to calculate the square root of which number? a का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। अब मैनुअली आप देख के बता सकते हो कि 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे, सो यू विल गेट द आंसर एज 7। बट जब आप क्या करते हो, जनरली जावा प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग देख के उस चीज़ को बता सकते हैं ना, लेकिन वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होगा, दिस डी एक्चुअली विल गेट इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। एंड दिस टास्क sqrt फंक्शन विल गेट परफॉर्म्ड एट रन टाइम, दैट्स वाई डी विल गेट इट्स वैल्यू ओनली एट रन टाइम, एंड दिस इज नोन एज योर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्लियर हो गया? इफ आई राइट हियर d is equal to 10.6, now this will be what? static initialization। so I hope the difference is clear between the two। अगर आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो इनिशियलाइजेशन डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो रही है, तो स्टैटिक है, और अगर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं है तो डायनामिक है। वेरी इजी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स आर द पंक्चुएशन साइंस यूज एज स्पेशल कैरेक्टर्स। कुछ पंक्चुएशन साइंस होते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क, डॉट एंड सेमीकोलन, दीज आर नोन एज पंक्चुएटर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन मार्क टेल अस द एक्शन टू बी टेकन when the given condition is true using the ternary operator। see, this one we will discuss later on in the next chapter। when we will start our next chapter, then we will study this concept, ठीक है। but till now you just learn the definition that question mark is used to take some action, ठीक है। then dot operator, you all know why we use dot operator। dot operator, like here we use system dot out dot println, or we use java dot io dot star, ठीक है। so here is the definition to represent the scope of the function for this, ठीक है। learn the definition for all these। then for semicolon, used as a स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, उसको फिनिश करने के लिए, उसका एंड डिसाइड करने के लिए। लाइक इंट ए इज इक्वल टू 5, उसके आगे लिखा है सेमीकोलन, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, दिस इज फिनिश्ड हियर, राइट। नेक्स्ट वन इज सेपरेटर्स, लास्ट टाइप ऑफ टोकन हियर, नॉट लास्ट, 2 आर more are left। separators are the special character which are used to separate the variables or the characters। for example, comma, brackets, curly brackets, square bracket, all these are known as what? separators। clear? now next is your operators। so operators also discussed in the very starting video of this chapter। operators are the symbols that perform some mathematical logical operations। types of operators we have discussed, arithmetic, relational and logicals। now I am not going to explain it again, okay। next one is keyword। keyword are the special words which are preserved by the system and carry special meaning। इसका मतलब क्या है, keyword कुछ ऐसे word होते हैं जो पहले से fixed होते हैं and whose meaning is already defined to the java compiler। for example, कुछ ऐसे वर्ड जो आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि क्लास, पब्लिक, थ्रोज, फॉर, SQRT, सिस्टम। नाउ दीज आर सम मैनी कीवर्ड्स आर देयर एक्चुअली इन जावा, ठीक है। तो मैनी कीवर्ड्स आर देयर एंड विच कैरी देयर ओन स्पेशल मीनिंग, यू कैन नॉट यूज़ इट इन योर ओन वे। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते हो कि इंट क्लास, you cannot take the identifier name as class, this will become wrong because class is actually a keyword which is having its own meaning, right। so here our tokens and types of tokens is completed। now daily I will upload one video and I will try to complete
third chapter as well as fourth chapter before your holidays will get started. And even if your holidays will start, so I will try if it is possible. Otherwise, if it is not possible to complete your third and fourth chapter, then I will upload the videos of chapter number 4 also in the month of June, first week only. Otherwise, I will try to complete it up to 30th or 31st of May. So please go through all the videos. Daily I will upload the videos one by one, not only on Wednesday. Daily I will upload the videos. So please watch those videos. That's all for today. Thank you.